Hello and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. And I have to say, it's been some Monday madness over here. I mean, it could have swayed either way, but kudos to the team that have won, which is Rajasthan. Nikhil, I'm going to start with you. I mean, I think for the viewers who don't know, we usually tend to come on 10 minutes before the show. We're watching the game, we're discussing things, and all three of us were like, kuch bhi ho sakta hai, and that's the beauty of T20. And also, it's the 15th anniversary for IPL. So it had to be a game like this, right? It wouldn't make sense otherwise. Yeah, without a doubt. The whole journey started 2008 at 150 odd from Brendan McCullum. First season, setting the tournament on fire. Today he's sitting in the dugout, coaching the side as well. But what a game! I thought we should be watching cricket, not sitting on a roller coaster ride. Yeah. Well, you're going up and down, you're swaying, you're going left, right, and center. You lose a couple of wickets, then that innings from Umesh Yadav with 20 odd that he got in quick time. You thought that now that they'll look to win the game, and then he gets out. Incredible. Think about the bowlers tonight, Karishma. 427 runs being scored in a matter of 40 odd overs. I think we lost Nikhil. Yeah, Lalchanji, you can also give us your views. I'm very excited to hear about it. I think Karishma, this is one of the fantastic cricket game which we have witnessed, because started firing and got 150 odd plus. So this is the 15th anniversary, and I think KKR started the same way. Sorry, Kolkata, but unfortunately they could not cross the line. But it was a cracker of a game. I think they had missed in between, because that one over from Chahal really brought the game back to Rajasthan. Yeah. Let's talk about Chahal. He's in the form of his life right now, right, Nikhil? Phenomenal. And we said this before the start of the game as well. Grandmaster, plays chess, knows what kind of deliveries to bowl to what kind of batsman. He's given 40 odd runs, and because of the kind of track that he's been bowling, you're looking to defend 217. But the important part is the 5 wickets. As a wicket taker, your job is fair enough that you get hit when you're looking to bowl those sort of lengths, and you come back trying to bowl the same lengths that as a bowler you had planned to come and bowl, and you look to pick up wickets, and that's exactly what he's done. He might have gone for 40 odd, but 7 dot balls in that spell of his as well. It's incredible. So you got Mishra there, the 3 of them that you had the little trivia there, that he's got 3 hat-tricks, the leg spinner, and now you got another one. Yuzi Chahal, there's Shreyas Gopal, Samuel Badri, Thambe. So all these guys, what's happening with all the leg spinners? It's incredible with all of them. And every few years, it just goes to show, if you have the skill level to turn the ball and the ability to just back yourself with that belief, I'm going to try and hit that length that I as a bowler want to. You as a batsman want to come after me. I just need to turn the ball a couple of inches, and that's good enough for me to actually get you to mistime your shots. And that's exactly what he's done. Yeah, game changer for sure. Beautiful drift, if I may say so. Lalchanji. Yeah, even that shows that wrist spinners are game changers. If you look at all the wrist spinners, they have taken, hat-tricks, but every coach or captain will always have a leg spinner or a wrist spinner in that team, and those wrist spinners will win you games. They will go for runs, but ultimately the wicket-taking ability, I think they have got the wicket-taking ability, and we always call them as the game changer. And today we proved it. I think Chahal proved that they were cruising easily, but in that one over, he got those hat-trick, almost 4 wickets that changed the game altogether. So I think wrist spinners are the game changers. Absolutely. Let's talk about Joss, the boss, now. I mean, I was watching that part of the game quite well, I have to say, and it was phenomenal. We have to talk about Butler. Without a doubt, once again, comes into the power play, looks to, overpower every single bowler. जिस तरीके से वो दबाव डालते हैं बॉलर के ऊपर, तो एक समय था जब पडिक्कल उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, 60 रन आए थे,
उसमें से 10-12 रन पडिक्कल ने बनाए थे, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। सिंगल लेके 8 बॉले 10 बॉले उन्होंने खेली, सिंगल लेके जॉस बटलर को स्ट्राइक दे रहे थे और वो चौके और छक्के लगाए जा रहे थे लगातार अंतराल पे। और वो फिर वो चौके और छक्के जब वो लगा रहे थे, वो पावर प्ले के बाद वो स्ट्राइक रेट कम नहीं हुआ, वो Yeah. उसी तरीके से वो रन बनाते चले गए। लगभग 170 के स्ट्राइक रेट से 103 आप बनाते हैं, तो आने वाले बैट्समैन के लिए काम आसान इसलिए हो जाता है करिश्मा, क्योंकि बाकी बॉलर्स का थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है। दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट हाउ डू वी लुक टू कंटेन दिस स्टीम रोलर ऑफ बैटिंग एग्जीबिशन। Yeah. I mean, consistent strike rate throughout. Do you think Virat Kohli might be feeling slightly under threat with this? I think in 2016 he had his 973 score. Lalchan ji, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा threat तो लग रहा होगा उनको. 973 is what he got in 2016, and now we're seeing this kind of performance. I think this year he's been incredible, I would say. See, जैसे निखिल ने कहा उनका स्ट्राइक रेट, he has always maintained his strike rate. See, जब कोई बैट्समैन अच्छा खेलता है ना, तो फर्स्ट पावर प्ले में अच्छा उसका स्ट्राइक रेट होता है, बट देन आफ्टर दैट उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है, बट ही ऑलवेज मेंटेन्स दैट, एंड देन एट द डेथ ओवर्स यू सी दैट स्ट्राइक रेट दे गो ऑन मोर देन 200. It's incredible. And I felt that in between the second last over they really bowled well, so their scoring rate came down, but I think they could have ended up with 220 plus, 225 plus. So I think the way Butler is batting, he has got his second 100 as well. So it gives the team a solid start. We always keep on talking. Opening is very important. Top three batsmen, one batsman has to bat big, and that batsman will always give them a big score. And that's what is happening with Joe Butler, because he's getting that start. He's not getting out after 30s or 40s, but he's batting deep and getting to 100. So that makes a difference for Rajasthan Royals. That's the reason why they have been winning. They are defending, and this is the fourth game in a row that they have defended and won. So that shows the nerves. They are keeping their nerves better, and even bowling in the second at the death overs, I think they are keeping their nerves really calm and cool so that they can get over the line. Absolutely. I mean, let's also talk about a more or less perfect captain Shreyas as well, with his wonderful performance today, Nikhil, because that is a man that we need to talk about, certainly. Oh, without a doubt, and I'm happy. When he came out, all guns blazing. वो दुर्भाग्य से कलकत्ता के लिए वो रन आउट हो गए थे सुनील नारायण। उसके बाद ये जब बैटिंग करने आए 3 नंबर पे, वो 85 रन 51 गेंदों में कम से कम वो गेम में बने रहे। सिर्फ एक तरफ से रन नहीं बन रहे थे, एरन फिंच के साथ जो साझेदारी हो रही थी एक तरफ से नहीं बन रहे थे। जब वो आउट हुए तो जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पे लेके वो चले। 166 के स्ट्राइक रेट से आप रन बना रहे थे। और एक गोल्डन रूल होता है करिश्मा, जब आप चेस कर रहे होते ना, इफ द गेम स्टार्ट्स एट आस्किंग रन रेट एट अबाउट से 11, आप जब बीच में बैटिंग कर रहे हैं तो आपका काम बतौर बैट्समैन है कि वो आस्किंग रन रेट थोड़ा कम कर दें, सो दैट देयर इज अ लिटिल कंफर्ट जोन फॉर द नेक्स्ट मैन वॉकिंग इन। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था, गेम को कंट्रोल किया। ये तो दुर्भाग्य है कलकत्ता का और कुछ स्किलफुल एंड स्मार्ट बॉलिंग बाय यूजी चहल कि इन्होंने वो गेम फंसा लिया, नहीं तो आज ये 217 रन चेस होते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लालचंद जी, आपको श्रेयस के बारे में क्या बोलना है? We all have seen that he's an exceptionally dangerous player. हम लोग उसकी बात करते हैं कि इंडियन टीम के बहुत बड़े हिस्से बने हैं, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक ही गिव्स दैट कॉन्फिडेंस टू द अदर प्लेयर्स एज वेल, एंड बीइंग अ कैप्टन, मुझे लगता है कि कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड ही इज लीडिंग दैट। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज स्कोरिंग रन्स, then even in the field he is making the subtle changes. Today they could have won easily, because if he was there they could have won easily, but I think they are not crossing the line. This is the third game in a row that they are getting beaten, so hopefully they will cross the line. Once they start winning, then that winning combination, because we always say that it becomes a habit, but now it's in a habit mode of losing, because they're just losing those close games. So hopefully once they start winning, then they get into that momentum of winning habit. Absolutely, absolutely. जैसे कि हम जानते हैं, anything can happen. निखिल जी, और आज तो रन बनाने भी थे करिश्मा, क्योंकि थोड़ा सा बतौर लीडर, और आप जब भारत के लिए खेल रहे हैं, आपको दुनिया को दिखाना भी है ना कि आप इंडियन टीम में क्यों खेल रहे हैं, बिकॉज योर
better than some of the uncapped players who are on display. राहुल त्रिपाठी आपको रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रेशर कह लीजिए या दो लोगों के बीच में वो भिड़ंत, एक की भूख और एक तरफ ऑलरेडी जो खिलाड़ी भारत के लिए खेल रहा है तो कह रहा है कि भाई मैंने रन बनाने जरूरी है, मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट ऑस्ट्रेलिया के लिए विश्व कप के लिए पक्की करनी है, तो मेरे भी ये कंट्रीब्यूशन के जरा आप देखते रहिएगा. सो आई गेस you want people to Yeah. fight for that spot because that's how you will probably get the best guys flying to Australia for the T20 World Cup as well. Absolutely, that's what all IPL is about, because you showcase your talent, right? So that you can go and play these games in Australia. Just आपने कहा. Let's take a look at the social tracker powered by Sky247.net और देखते हैं कि social दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं. Okay, let's look at the first tweet. It's on Joss Butler by the Rajasthan Royals account. There you go, shining in all his glory in pink. If you do it once, you're great. If you do it twice, you're Joss Butler. I like that. Yeah, that's a good one. And this is the mean Joss the boss. Look at the bowlers running for cover. Very innovative. Next, do we have one more? Not so good news for Delhi. Unfortunately, Delhi Capitals all-rounder Mitchell Marsh has tested positive for COVID-19, following which he has been admitted to hospital. And of course, the Delhi Capitals medical team. Nikhil, let's just talk about this very worrying news, because if one player has COVID, we just don't want the same thing that happened last year, But now I'm sure it's a shorter span. I know. एक तो मिचेल मार्श के लिए बड़ा खराब लगता है करिश्मा, उनकी ना हम लोगों की क्रिकेटिंग भाषा में कहते हैं कि इनकी बैड लक भी खराब चल रही है. बेचारे जब ये टूर्नामेंट खेलने आते हैं कभी इंजरी हो जाती है, वो पूरा सीजन बेचारा खेल नहीं पाता, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है. आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए. और रही बात, देखिए बबल क्रिएट किया है, जिस तरीके से अब धीरे धीरे ये केसेस बढ़ रहे हैं, आई जस्ट फील कि सब लोग वैक्सीनेटेड है, बहुत लोगों के अब बूस्टर्स भी लग गए हैं और जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कमजोर भी हो रहा है. अब इतनी मेडिकल एक्सपर्ट्स भी लगे हुए हैं. आई गेस नाउ इज द टाइम कि दुनिया भी खुल रही है. यूरोप में आई बिलीव आप शायद पहले ज्यादा बेहतर बताएंगे, यू आर जस्ट लुकिंग टू ट्रीट इट लाइक नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू. आप देखते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं, 3 दिन 5 दिन आप थोड़ा आइसोलेशन में रहते हैं एंड देन आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने को देखें. एक टाइम था शुरुआत में जब ये चीज जो है वो जानलेवा हो रही थी तो ज्यादा खतरनाक थी, बट आज जो मेडिकल एक्सपर्ट जो हर जगह से हम सुनते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने को देखें. सो आई जस्ट होप दैट दिस डजंट कंटिन्यू and there's no threat on this wonderful tournament. So I just hope that this gets contained right there and there, where you're able to nip this in the bud straight away. Yeah, I mean, the Premier League as well over here in England, if anyone has COVID, they're away for 4 or 5 days as long as you have substitutes, but the game must continue. यहाँ पे ये चल रहा है. तो आपको क्या लगता है लालचंद जी, they'll do the same thing in the IPL? As long as they have substitutes and people sitting on the bench, they should be able to continue. Yeah, I don't think there will be a threat to the IPL because nowadays, as we all know, that medical teams are very good. They take care, they take precautions, and if someone is, then they isolate him. I feel that they have to take precautions. As we said, everybody has taken that vaccination. They have taken boosters, and people are staying in the bubble. It's unfortunate that it has happened, but I don't think so. It will spread along, And look, this tournament is fantastic. The whole world is watching IPL, and everybody wants to see this game, grow. And I don't think that there should be any problem for this tournament. And I hope and pray that this tournament goes off very smoothly, because it should not happen like last year that half the tournament was done here and half the tournament in UAE. But I'm sure this will continue and finish in India only. Absolutely. Let's just hope he has a speedy recovery. But we have one more tweet for our very own player. Let's just take a look. This is by Wasim Jaffer, bowling the 17th over with game on the line after being hit for runs. This is basically on Chahar.
A line-hearted performance indeed by Yuzvi Chahal. So a lot of congratulations and love for him because he is a great cricketer. Let's take a look at the numbers tracker and have a look at the points table, shall we? Nikhil, we're going to take a look at the points table. As you can see, Gujarat, Rajasthan, Lucknow, and if you can just take us through it briefly. जी देखिए, गुजरात नई टीम 10 अंक, राजस्थान के 8 अंक, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस 2 अंक से पहले राजस्थान वो नीचे थी, 5वें स्थान पे थी, अब लखनऊ से ऊपर चली गई क्योंकि वो नेट रन रेट उनका बेहतर हो गया है। और मजे की बात यह है कि ये 2 अंक प्राप्त करके जब 8 अंक हो गए हैं राजस्थान के, जो चारों मुकाबले जीते हैं करिश्मा, ये चारों डिफेंड करते हुए हुए। इन्होंने पहले बैटिंग करके स्कोर को रोका है, तो पता चलता है कि बॉलर्स वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट भी वापस आ रहे हैं। अमूमन आप टीम्स देखते हैं, जिस तरीके से गुजरात की टीम है वो चेस करके जीत रही है। जो 10 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं उसमें से लगभग सारे मुकाबले चेस करके, वो अंतिम क्षणों में मुकाबले 12 रन चाहिए थे 2 गेंदों में, वो चेस करके हुए। पर ये शायद एक टीम है लालू भाई जो 4 में से 4 मुकाबले डिफेंड करके आ रही है। So, I mean, kudos. ऐसा नहीं है कि आप टॉस जीते मुकाबला जीत गए। ये टीम आपके सामने सबसे बड़ी उदाहरण है। Yeah, see, they have proved everyone wrong because most of the captains they win toss and bowl first, and they think they will win. But this is the only team कि इन लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं और मैच जीत रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा कि इन लोग डिफेंड कर रहे हैं। इनके बाद देखो 2 अच्छे स्पिनर है, अश्विन और चाहल काफी अच्छी डाल रहे हैं, और मीडियम में बोल्ट, आई थिंक बोल्ट बोलिंग एंड कमिंग बैक दिस गेम मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट भी काफी अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन लोग बॉलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं कि दे डोंट पुट प्रेशर। इफ यू लुक एट मैकॉय, he gave too many runs in earlier over, but he bowled the last over, so that shows the confidence. Same thing with Chahal का पहला ओवर में 17-18 रन दिए, लेकिन वो 19वां ओवर डाले और उसने 18वां ओवर डाले और देन उसमें से 4 विकेट चटकाए। So you can see the difference, the mindset. I think they are giving that confidence to the bowlers. जो पिछला हो गया ठीक है, but you are the bowler to go, and that confidence is given, and when the confidence is given, मुझे लगता है कि bowler और भी अच्छी तरह से वो डालता है। बिल्कुल। करिश्मा, I'll give you a little task, छोटा टास्क देता हूँ आपको। एक ही टीम में एक बल्लेबाज ने 100 बनाया, उसी टीम के मेंबर ने वो 5 विकेट निकाली। कितनी बारी ऐसा हुआ? अगले शो में ये पूछेंगे सवाल, और आप पूछना, ठीक है ना? क्योंकि जॉस द बॉस ने 100 बनाए और यूजी चहल ने आपको 5 विकेट ले ली। Let's talk about these 2 men only right now. Let's take a look. Leading run scorers, as you can see with their, there's Butler. He is streets ahead, like literally. बहुत फर्क हो गया अब तो, बहुत आगे निकल गए। और वहीं पे यूजी चंचल चहल जो है वो भी आगे चले गए, 17 विकेट, 5 विकेट क्लियर ऑफ एवरीबॉडी एल्स। और जरा थोड़ा सा वो लास्ट कॉलम पे भी गौर फरमाइए गुरुजी, 7.5 से कम की इकोनॉमी, आज 40 रन देने के बाद भी तो पता चलता है कि किस तरीके के फॉर्म में है ये गेंदबाज। अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। Absolutely. चलो करते हैं बात। Another incredible game coming tomorrow. We have Lucknow taking on Bangalore. Lucknow is quite on top, if I may say so. Let's briefly talk about them, these 2 teams, before I let you gentlemen go. देखिए, पिछले मुकाबले में कप्तान साहब ने, लखनऊ ने, उन्होंने 100 बनाया था। केएल राहुल ने, वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। क्विंटन का बल्ला अच्छे से बोल रहा है, आयुष बदोनी, दीपक हुडा, ये टीम में वो क्वालिटी है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेंगलोर भी जोर से वापसी करने को आएगी। आपने अभी एक नाम लिया था, 973 रन बनाए थे, 973। वो विराट रन मशीन का बल्ला अभी शांत है, तो शायद कल उनके लिए भी बल्ला बोलेगा, तो ये भी एक कड़ाकेदार मुकाबला होने को है। कुर्सी की बेटियां मान लीजिए, हर रोज एक धमाकेदार रहेगा मुकाबला। इसीलिए आईपीएल है, मैचेस है, बिकॉज आईपीएल मैच में कोई भी मैच बोरिंग नहीं होती है।
और आपको ऐसे ही मैचेस देखने मिलेंगे, बिकॉज T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको बिल्कुल। धमाकेदार मैचेस मिलेंगे। और जैसे कि निखिल ने कहा कि ये देखिए we are all expecting, yeah, to Virat Kohli to fire. So hopefully Yeah. it's a day for him tomorrow. Who's gonna win, Duke? Oh, okay. Okay, fine. He's very neutral over here. There's no Yeah, it's expression. very quiet. Yeah, very He's quiet. not quiet. I think he's camera shy. But we will be back tomorrow to talk about this game further. Thank you so much, gentlemen, for joining me and for our lovely viewers who keep messaging me to bring Duke on. So there you go. There was Duke. हम कल फिर आपको मिलेंगे on the same place, same time. Sky247.net presents Not Just Cricket, and it's going to be a cracker of a game tomorrow. Good night and God bless. Thank you, Good thank you, night. Good bye, night, bye. Thank you, good Karishma. night, good Bye. night, bye. Good night, Bye. Nikhil. Good night, Alva. Good night, bye.